Welcome to level 2 and level 3 of spoken English series. Level 2 is intermediate and level 3 is proficient या advanced level. इन दोनों को मैं अभी फ़िलहाल क्लब करूँगा. So to start in this level, आइए पहले सुनते हैं एक बहुत ही अच्छा communication, बहुत ही अच्छा conversation जो कि well articulated in a simple, balanced way, within a controlled pitch and modulation of the voice. ये conversation आप सुने और उसके बाद we'll continue with the lecture series. और मैं चाहूँगा कि इस ऑडियो को जो कि एक प्रोफेशनल्स के द्वारा डेवलप की गई है ग्लोबल इंग्लिश के द्वारा, तो आप इसको गौर से सुने और फॉलो करें, एक्सेंट को फॉलो करें और देखें कितना ये पोलाइट और courteous, balanced in a simple language ये कन्वर्सेशन है. और इसमें एटिकेट, फुल ऑफ एटिकेट्स, इसको फॉलो करने की कोशिश करें आप. How to cancel an appointment and make it practice. इस ऑडियो के बाद हम लोग जो हैं. Welcome to Global English. This is a weekly series of English lessons for non-native speakers to practice English language for daily conversation. Global English, Lesson 1. Cancelling an appointment. Cancelling an appointment. It's really a common situation. Sometimes you have an appointment at a doctor or at work, and you have to cancel it. So, we are going to have some great language to help you cancel an appointment. So, let's listen to a dialogue where John and Mary have a phone conversation and Mary is trying to cancel an appointment. This conversation is going to be a little fast, but after you listen to the conversation, I would be explaining you all the great vocabulary. Alright, let's listen to the conversation. Dialogue. Hello. John speaking. Hi John. This is Mary calling. Oh, hi Mary. What's up? I'm just calling about our meeting today. I wonder, is it possible to reschedule our appointment in the afternoon? I have a bit of an emergency that I need to take care of. Let me see. Well, it shouldn't be too much of a problem. I'm really sorry. I hope it doesn't inconvenience you too much. It's just this thing came up. Mary, you know what? I can't make it to our meeting either. Why don't we postpone it to tomorrow afternoon at the same time? Sounds great. See you tomorrow. Well, you heard some really interesting words in the dialogue. Come, let's review them in our next section, Vocabulary Review. Vocabulary review. In Vocabulary Review, I am bringing you 3 words. The first word is reschedule. To reschedule. So what does it mean? Well, when you reschedule something, for example an appointment as you heard in the dialogue, it means you are changing it to another time or day. Okay, the second word we have is inconvenience. So to inconvenience someone means making things not convenient for that person. Or you can say, to make things a little difficult or a little uncomfortable for that person. Our next word is postpone. To postpone. We have some examples for the word postpone that will help you understand its meaning a little better. Let's listen. Example 1. Since Ram is late again, we have to postpone the meeting. Example 2. I am sorry Rachna, our vacation is postponed until next month, due to an emergency at work. So, basically postpone is to delay. Or you can say, to plan something at a later time. Okay, some great words there. We can now listen to some of the phrases we heard in the dialogue in our next section, Fluency Adder.
fluency adder. So, we have 3 great phrases for you from this dialogue. Let's listen to them. The first phrase is, "What's up?" So, what do you mean by, "What's up?" What's up? This is a very common way of saying, "Hi." Or you can say what's going on. The interesting thing is, many people don't know how to answer this phrase. Well, I see this all the time with my students. So let's start with the lecture series now. Introduction. Let us start the journey of learning fast the world's most powerful communicative and spoken language, that is English. In my opinion, there are perhaps only a few hundred power words that makes the difference, and those are the words that make our language work actually. Take it for granted. There are only a few hundred power words that makes the difference, and actually that work actually. Hence it can rightly be said that the thought is impossible without words, because in your mother tongue you have the expression, you have the language of expression of your sorrows, of your happiness. जो भी आपकी दुख तकलीफ होती है वो आप अपने मदर टंग में किसी से पूछने ही नहीं जानते. इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस जो आप बचपन से देखते और महसूस करते आ रहे हैं, फील करते आ रहे हैं. ऑलरेडी आपके लेक्सिकॉन में वो होता है, वो आपके वोकेबलरी होती है जिससे कि उसको आप एक्सप्रेस कर पाते हैं. बट फॉरेन लैंग्वेज के लिए आपको ये वर्ड्स जो है जितना ज़्यादा और रिलेवेंट वर्ड्स जो है ज़रूरत की, जो कि बात करते हुए एक्सप्रेशन आते हैं टू डिफरेंट पीपल में, तो वो आपके स्टोर होता चला जाता है आपके नेचुरल सीपीयू में, और उसको आप रिकॉल करते हैं और कम्युनिकेशन आपकी सुधरती है और अच्छी होती है. सो यू गॉट टू accumulate, you got to collect as many words as you can. So increase your word power, it pays. Why? It pays. There are only a few hundred power words in our language that actually make our language work. I'll try to gather the best of them. जो हम लोग वोकेबलरी बढ़ाएंगे, लेक्सिकॉन बढ़ाएंगे, पावर वर्ड्स जो हम लोग सीखेंगे, तो उसमें जो है कुछ ही बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है. सो फ्यू हंड्रेड पावर वर्ड्स, उसी से काम चलता है, जैसा मैंने पहले ही बताया. तो उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. हाउएवर, सम पावर वर्ड्स सच एज पंच, कट, kick, shout are known to the every literate persons are therefore ignored. अब इसको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है भाई, पंच क्या है, कट क्या है, and how it should be or how it can be used. Kick, shout, these are very simple words that is being used every day. So this sort of words will be ignored. Then believe me, success and vocabulary go hand in hand. ये तो एक कॉमन सी बात है. This has been proved so often that it no longer admits of argument. कहने का मतलब है कि एक अच्छा जो ओरेटर होता है, गेट्स पॉपुलर, चाहे डिप्लोमेसी में हो या पॉलिटिशियंस हो या कोई अच्छा डिबेटर हो, जहाँ आप कम्युनिकेट बढ़िया से करते हैं, अपने मैसेज को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन टू पीपल इन अ सिंपल एंड वेल आर्टिकुलेटेड वे, जिससे कि लोग समझ सकें, इजीली आप ट्रांसफर कर लें अपने मैसेज को. ही इज द बेस्ट स्पीकर. तो इस चीज को आपके अंदर डेवलप करनी है. विथ बॉडी लैंग्वेज भी आना चाहिए साथ में, एक्सप्रेशन के साथ. सो बिलीव इट और नॉट, इवन द वोकैबुलरीज एंड द स्टेटस एंड डिग्निटीज ऑफ ए स्पीकर यूजुअली फॉलो द सेम असेंडिंग स्केल एज दैट ऑफ द एवर इम्प्रूविंग स्किल एज ए स्पीकर, बी इट ए प्रोफेशनल और डिप्लोमैट, जैसा कि मैंने बताया. तो एक इम्प्रेशन तो बनता ही रहता है. देन our knowledge of words is all that makes it possible for us to understand our associates or our friends. अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जानने की.
ये जितनी अच्छी वर्ड्स के कलेक्शंस आपके पास रहेंगे उतना अच्छा आप अपने फ्रेंड्स या आपके काम जो करते हैं जिनके बीच में एसोसिएट्स, उनको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनको आप समझा सकते हैं कुछ भी। एंड ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा इसी से कि कितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग है आपके टीम से या आपके एसोसिएट से। और एक एक यूनिट आप देखिए कि अगर वर्ड्स ही के ऊपर तो क्योस हो जाता है, एक सोसाइटी भी बिल्डअप होती है एक अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से ही। सो नेक्स्ट इज एंड इट इज ओनली बाय वर्ड्स दैट वी कैन इम्पार्ट आइडियाज टू अदर्स। जैसा कि हम लोग तब से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका वर्ड्स ही नहीं होगी तो आप क्या सोच रहे हो और कितनी अच्छी बात सोच रहे हो, हाउ कैन यू एक्सप्रेस दैट। तो it's a words and selection of words, particularly selection of words that matters much एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी काफी मायने रखता है। और कमांड देम टू डू आवर विशेस, कौन? अपने फ्रेंड्स को, एसोसिएट्स को या सोसाइटी में या ऑफिसेज में। मोर इम्पोर्टेंट एंड दिस वी थिंक विद वर्ड्स, वी कांट थिंक विदाउट देम। सही है, अगर आपके पास वर्ड्स है तभी तो आप सोचेंगे, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाएंगे। जब आपके पास वर्ड्स ही नहीं रहेगा तो यू आर डम्ब, बेसिकली यू आर डम्ब लाइक एन एनिमल, यू कांट एक्सप्रेस। इसीलिए एक फेमस एडुकेटर, अमेरिकन एडुकेटर ने कहा भी है, डॉक्टर जॉन डीवे, दैट थॉट इज इम्पॉसिबल विदाउट वर्ड्स। इट्स वेरी ट्रू। So thus it can be concluded, concluded that there is such an intimate connection between ideas and words that whatever deficiency or fault there may be in the one necessarily affects the other. समझाने की जरूरत नहीं है। I mean, ideas और words में कितना intimate connection है, that is what I am discussing right from the beginning. कि आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, कितना ही अच्छा ख्याल आपके अंदर है, आप how can you express if you are not having your words? So it's as important as that. So हमको वो पहले words बढ़ाने पड़ेंगे in nutshell. उसके uses भी आपको जानना होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे in course of our exercises. It follows then almost like a law of mathematics that the more words you know, the more clearly and powerfully you will think. Exactly. एक बिल्कुल मैथमेटिकल रूल की तरह होता है ये। जितने अच्छा आपके पास वर्ड्स होगा उतना ही क्लैरिटी के साथ अपने एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन को आप रख पाएंगे। द मोर आइडियाज यू विल इनवाइट इनटू योर माइंड, उतने अच्छे अच्छे आइडियाज भी आपके माइंड में आएंगे। सो द वर्ल्ड हैज सडनली डिस्कवर्ड दिस ट्रूथ and has become word conscious never before. वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इतने सारे जो अलायंस बने हैं, सार्क हो, नॉन अलाइंड हो, तरह तरह के, उसमें क्या डिस्कोर्सेज होते हैं, डोजियर्स होते हैं, उसमें क्लस्टर ऑफ वर्ड्स जिसमें कि हम एक्सप्रेशन देते हैं, डिफरेंट दुनिया के अलग अलग लीडर्स जो हैं अपने एक्सप्रेशन देते हैं और वो साइन होता है। So certainly the world has suddenly discovered this truth and has become word conscious as never before. It has awakened to the overwhelming power of words. Hence, without words, the wheels of business would stop spinning. And without words, we would still be as savages. Okay? The accumulated knowledge of medicine, of philosophy, of the science, of the life work of the great dead could not have been passed on except by the magic of words. So without them we would be like the ants, चींटियों की तरह, क्योंकि जिसकी पैटर्न सदियों से एक ही तरह के लाइनें लगा के चलती हैं, वो पैटर्न नहीं बदला। काफी मेहनती होती हैं, दे आर वेरी इंडस्ट्रियस, लेकिन पैटर्न वही है। सो we would be just like an ants, जिसका पैटर्न वैसे ही रह गया और that didn't change for million of years. So you have to develop this tendency to collect as more words as you can so that you can express well. और दूसरी चीज ये होती है जब आप कम्युनिकेशन करते हैं
किसी स्ट्रेंजर के साथ या किसी नेटिव के साथ, तो कोशिश ये कीजिए कि उसकी वोकेबलरी के को समझ आप ले लें। वो जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। बिकॉज अगर वो सिंपलर वर्ड्स जो है यूज कर रहे हैं, नॉट वेरी लिटररी, और आप वहाँ पर बोले तो वो नहीं समझ पाएगा। लाइक यू आर डूइंग इन योर मदर टंग में आप जो डिस्कस करते हैं हर तरह के लोग से, उसी तरह की बात सोचेंगे आप। ओके, so let us look at it once again. So without words we would still be savages. The accumulated knowledge of medicine, of philosophy, of the sciences, of the life work of the great dead could not have been passed on except by the magic of words. कोई भी रिकॉर्ड जो हेरोडोटस के ज़माने से अभी तक की हिस्ट्री नहीं आती, हिपोक्रेट्स के बाद अभी तक मेडिकल साइंस नहीं आता, इंसाइक्लोपीडिया नहीं बनती, फिलॉसफीज नहीं आती, अगर वर्ड्स ना होता, लैंग्वेज ना होता, तो आज कंटेम्पररी वर्ल्ड तक नहीं पहुंचता ये। सो विदाउट देम वी वुड बी लाइक द एंड्स, चींटी के तरह हो जाएंगे हम लोग। whose pattern of living has remained unchanged for millions of years, like लाइनें लगा के चलती आ रही हैं तो चलती आ रही हैं। There is no change of pattern as such ever since the time immemorial. And other tribute to the power words lies in these strange circumstances. कैसे? गौर करेंगे आप। When words fail, बात जब फेल कर जाती है, then what happens? जब डायलॉग्स बिटवीन टू नेशंस फेल कर जाता है या बिटवीन टू ग्रुप्स फेल कर जाते हैं, तो फिर डिबेट्स हो जाती हैं या वॉर हो जाता है। Nowadays, warplanes often drop words instead of bombs. हकीकत है ये। In some nations, men are jailed for not listening to the right words. That is very true. In a democracy also, you have been given full documented constitution, documented codes, जिसको आपको ने फॉलो करना है। आप पढ़िए, जानिए, आप फॉलो कीजिए and be a good citizen. And if you are not following that, जो आप समझ रहे हो, then you are jailed because violating those codes that has been documented, well documented in the constitution. So men are jailed for not listening to the right words on the air, and they are shocked for listening to the wrong ones. Or when war finally ends, we settle our disputes with words. There are various agreements and so on and so forth. Various dossiers that comes in after the end of a war or end of an impasse. So, language, the words are very, very important part. You can't think, you can't express, nothing could be achieved. You are just like an animal. Thus, Mr. and Mrs. Parent and Mr. High School Principal is a famous saying, if you want your children to achieve success with his studies in college, look to his vocabulary. Of course, there are other ways to success in life besides building one's vocabulary, but there is none that is easier. It's very easy to increase your communication ability by increasing your vocabulary. Just remember today, the reading ability of people across the nation is that of 7th grade pupils. Is very, very true. This is very, very true. The reading ability of people across the nation is that of 7th grade pupils. Surveys show
that the average person cannot understand material written above the level of 12 or 14-year-old children. So what simpler way is there to avoid competition than by raising your own vocabulary above the common level? So there is no any simpler way to avoid competition. One pleasant and encouraging part about this is that it is so easy to do it, and it takes so little time. A few minutes a day is enough. Let me conclude this introduction on this note. During the course of you will come across the verbs first. The verbs will be discussed first, which is the main springs of language, which is in true sense the mainspring of our language. Then we will follow the nouns that are the building blocks of our thoughts, जिस पे आपकी thoughts जो है बनती हैं noun पे. Then come the adjectives, the pigments that gives color to our sentences. Pigments जो होते हैं plants में उसके petals को या उसको color देते हैं. And to a minor extent you will encounter those modifiers called adverbs. The other parts of speech is prepositions, conjunctions, and such can hardly be ranked as words of power. So thank you. So you just remember these things in your mind. It's a very verbs is the mainspring of the language. Nouns are the building blocks. Adjectives are the pigments that gives color to the sentences. And minor extent, which is a modifier of this these sentences is adverbs. And other parts of speech, that is preposition, conjunction, and such can hardly be ranked as words of power. So thank you. We'll meet in next episode for advanced learner, that is those preparing for IELTS, TOEFL. Or that will be a very systematically organized one, reading, speaking, listening, writing. All these things I'll discuss in detail about the curriculum that actually expected from the person who is appearing for IELTS examination. So in very next episode, don't forget to touch the bell icon to subscribe my channel. Thank you.